Hello friends, welcome back to my channel English with Menika. How are you doing all? Hope you all are doing great and you all are practicing your English in a great way. थोड़ी सी मेरी चेहरा थका थका लग रहा है because I trying to record video since morning but it not possible due to घर में थोड़ा सा काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही थी. दैट इज़ द रीज़न एंड नाइट का टाइम होते थे ऑलरेडी. आवर बॉडी एग्जॉस्टेड एंड काम की ज़्यादा मेरी बेटी की वजह से मैं ज़्यादा थक जाती. तो ये टॉपिक नहीं है, चलिए कम टू द पॉइंट. सो टुडे आई कम विथ अनदर इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल टॉपिक फॉर प्रैक्टिस. सो बिफोर डाइव इनटू द सेशन I just want to request all of you guys, make sure watch this video till the very end. हाँ, तो आज की टॉपिक क्या है? What is today topic? The topic is how to think in English. But the way of think in English, what I am going to share with you, it will be very crucial. It will be totally different. Yes, I am going to give you something different with you guys, and you can apply this technique and you can see the result. Yes. Because if you want to speak English fluently, so you have to inculcate the habit of thinking in English. Because thinking in English is a significant part of learning and it is very essential aspect of practicing English. Okay, so you have to inculcate this skill. It is just a skill, but it skill will not develop without practice. But how can you practice? How to practice English that you able to think? Yeah, so I am going to not only going to complete this session by speaking, I will show you, I will see you how to practice, and I will share with you something different, something unique, and I will do with you guys. Okay, so basically what is the technique? There are two techniques. Okay, today I am going to share with you guys two techniques, and both are very 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 essential. Okay, so technique number one is how to think in English. You can describe the picture. You had right. डिस्क्राइब द पिक्चर, मतलब अब पिक्चर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, है ना. यस गाइज, यू हैव टू डिस्क्राइब द पिक्चर. कौन सी पिक्चर की मैं बात कर रही हूँ? वेयर यू विल गेट द टीचर, डोंट वरी. आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. यू कैन सी ऑन अ स्क्रीन देर इज़ वन पिक्चर. ओके, आई थिंक यू आर एबल टू सी इट एंड यू हैव टू जस्ट एनालाइज. आपको देखना है कि इस पिक्चर में कितनी सारी वाइब्रेंट चीज़ें अवेलेबल हैं. व्हाट आर द थिंग्स present in this picture? There are multiple number of things. Then what you have to do? It is possible you will able to think in English just watching the picture? No, no, not at all. तो आपको करना क्या है? बी काम. बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत ईजी स्टेप है. आपको करना क्या है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप पिक्चर में देख पा रहे हैं उन सारे का सिंगल वर्ड यानी कि सारे का स्पेलिंग बोलना है. ठीक है, लाइक रिवर, ट्री, बर्ड्स, डक, बोट. ठीक है, हेन, कॉक, फ्लावर्स, वाइब्रेंट कलर, सन. ये सारे जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यू हैव टू स्पीक सिंगल वर्ड्स, all the English name of those words. And then your next task is, then you have to frame small sentences. I'm not talking about typical sentence, I'm not talking about long sentences. No need to create a problem for yourself, no need to create illusion how to think. Be calm, be simple, and be try to apply easy technique. अब आपको सारे वर्ड्स को एक एक करके हर एक वर्ड को यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है. जैसे कि पहला वर्ड अगर हम ले लिए बर्ड्स, ठीक है ना, बर्ड्स.
birds are flying. That's it. Very simple. Tree. There are many trees. Simple. And water, there is clean water in the pond. You know? Feed flowers. There are many flowers and they are very vibrant color. बहुत आसान है. और अगर हम सन लें, सन इज़ राइजिंग. ठीक है. बहुत इजी इजी सेंटेंस सोचिए, बहुत इजी इजी सेंटेंस को फ्रेम करना है आपको. एंड देर आर सो मेनी बर्ड्स, दे आर फ्लाइंग इन द स्काई. ठीक है. तो इस तरह से जितने भी वर्ड्स आप ले, ठीक है ना, जितने भी यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस, not typical sentence, not verse sentence. And in this way you will gradually able to create the habit of thinking in English, because it is just a skill and you have to develop this skill by a practice. ठीक है. एंड दूसरा टेक्निक है हमारा नरेट योर डेली रूटीन. आई ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस थिंग in my last video. If you want to inculcate the habit of thinking in English, so you have to narrate your daily routine every single day. Every end of the day, you just, when you are going to hit the set, when you are going to sleep, you just take 5 minute pause and recap your whole day. And you just create a story. You narrate the story, use of your just like daily routine. Narrate the story. And in this way you will also start think in English, and you will see drastic change and so many changes in your speaking journey, and you will easily able to think in English, and next time you will able to speak about any particular topic. So thank you so much guys for watching this video. I hope मैं अपने डॉट को क्लियर कर पाई हूँ. और आई होप you enjoy this video. If you find any kind of learning in this video, please give me a thumbs up, share with your friends and subscribe to my channel. Stay connected with me. Thank you so much. Till now, bye bye, take care. Very soon I will meet in another session. Bye bye, take care.